Welcome to everybody. And from the beginning, already we have discussed the fundamental concept of depreciation in the previous classes, meaning of depreciation, definition, and different terms, and when it is used in different cases. Means like it is used in case of tangible, intangible fixed assets, intangible fixed assets, and side by side your vesting assets. And now this class is specifically written as, will be discussed as needs for charging depreciation. That means what are the needs of a charging depreciation? Why do we charge depreciation in business? आवश्यकता कौन अच्छी को आवश्यकता को आमे लक्ष्य करी गुरुत्व को लक्ष्य करी आमे गोटे आसेट रो वैल्यू को आमे डेप्रिशिएट करि थाउ मींस फिक्स्ड एसेट्स रो वैल्यू को डेप्रिशिएट करि थाउ दीज आर द नीड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिकेडी कहि दउची डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस. रिमेंबर दिस वन. डेप्रिसिएशन इज नॉट ए लॉस. डेप्रिसिएशन इज नॉट ए लॉस, इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस. लॉस आमे कहि परिबानी कारण ता अगेंस्ट आमे बेनिफिट पाउच. दैट इज व्हाई इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस. एंड नीड्स अछि कोन पई बा केउ कारण पई आमे डेप्रिसिएशन चार्ज करि था आवश्यकता कोन अछि का केउ पॉइंट को आमे गुरुत्व देकि देखुचे नाइ एथि पई हमकु डेप्रिसिएशन चार्ज करिवा पई पड़िबो. फर्स्ट वन इज टू ascertain द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. Every businessman is profit oriented and they are very anxious to know the volume of a profit earned or loss incurred during a particular period. So whenever we calculate the profit or loss during a particular period, in such cases you have to consider all the expenses incurred and all the incomes earned. All these are to be taken together and calculate the volume of a profit and loss. And as it is depreciation is a non-cash expenses, it should be provided for. And in a business, each and every part of the machine, each and every part of the fixed assets involved in producing goods. That means without help of assets, it is difficult to produce goods. And all the assets are the prime part in producing a particular goods. As these assets are used in producing, that means the efforts of such assets helps a businessman to earn some amount of profit or income. That is why whatever effort provided by such assets, the cost that incurred for such assets should be taken into account. To assert correct and profit loss, ठीक लाभ किंबा क्षति को पाइबा पाई हेले हमको जतिक परिमाण आसेट रो साहाय्य द्वारा आमे रेवेन्यू अर्न करूचे मींस इनकम करूचे. तेणु जेहेतु प्रत्येक आसेट रे इन्वॉल्व अछि बिजनेस रे इन्वॉल्व अछि से माने हमको प्रोडक्शन पाई हेल्प करछथि बिजनेस रे स्मूथली रन करे में हेल्प करछथि. तो सेति पाई समान करे किछि इफोर्ट दिबारु समान पे आमे किछि चार्ज करिवा दरकार चार्ज रखिवा दरकार. आमे जदि किछि इफोर्ट करू ता अगेंस्ट रे आमे पाउचे मीन्स गोटे वर्कर को आम ने से जी समय इफोर्ट दूसरी अगेंस्ट से रोचे रेमुनेरेसन रोचे मीन्स वेजेस नौ जी गोटे आसेट को आम व्यवहार करुचे आम जाचे आसेट धीरे धीरे जो व्यवहार कराए तार फंक्शनल कैपेसिटी हराए दैट मीन्स तार कॉस्ट को से हरई थाए. तो से जी कॉस्ट से हरैला से आम प्रॉफिट लॉस चार्ज कर पकड़ा दरकार जहाँद्वारा टू फाइंड आउट एक्जैक्ट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर period. That means to ascertain the correct profit or loss of the business. So without providing the value of depreciation, so it is difficult to find out the actual profit. If you don't provide depreciation during a particular period, the profit will show in inflated rate. अधिक परिमाण प्रॉफिट देखेबो. अधिक परिमाण प्रॉफिट शो करेले तार नेगेटिव इंपैक्ट अछि बिजनेस रे. बिजनेसमैन को तो हो पारे किंतु तार एडवर्स इंपैक्ट मध्ये अछि. आई विल डिस्कस लेटर ऑन द अदर पॉइंट्स टू शो फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉपर वैल्यू.
proper value. And you know, a businessman is not only profit oriented but also to know the financial position of the business. So without calculating the actual value of the assets, it is difficult to find out the financial position of the business. So without calculating depreciation, if all assets will be shown in the balance sheet at inflated rate, so that your financial position will show in inflated rate, which is not good. That is why to know the actual position of the business, means financial position of the business, all assets are to be depreciated and the actual cost price, means actual residual value of the or recorded value of the assets should be shown in the asset side of the balance sheet. As a result, exactly we can come to the conclusion what is the financial position of the business. आर्थिक स्थिति, आर्थिक सुच्छलता business रो जना पड़ियो balance sheet. Third one is to keep owner's capital intact. To keep owner's capital intact, it means if you don't provide depreciation and you know profit will show in an inflated rate. Profit जेतबेले inflated rate show करिवो, obviously that profit will be distributed among the shareholders in the heads in case of company form business. That will be distributed among the shareholders in the term of a dividend. Shareholders को हमें dividend आकार देते हैं. जेतबेले dividend आकार हमें show करिवा, obviously जति परिमाण प्रॉफिट शो करिवो दैट इज एक्चुअल सेटा प्रॉफिट नुहे, कारण आमे डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करिना हो, सेति पय नॉन कैश एक्सपेंसेस चार्ज नै नाउ, तनो नेचुरली जो प्रॉफिट को आमे डिविडेंड आकारे डिक्लेयर करिबा सेटा ओनर्स कैपिटल ऊपर इंपैक्ट पड़िबो, मींस नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो, कैपिटल रो वैल्यू निश्चित कमी जिवो. तो सेति पय हमको कैपिटल ओनर्स कैपिटल को इंटैक्ट रखिया पय, स्थिर रखिया पय हमको एग्जैक्टली करेक्ट प्रॉफिट रो आवश्यकता अछि. से करेक्ट प्रॉफिट कि लॉस रो आवश्यकता अछि, माने से करेक्ट प्रॉफिट लॉस पाइबा पहले हमको all types of expenses, either it is cash expenses or non cash expenses, means depreciation, non cash expenses depreciation should be provided, that should be debited to profit and loss account, so that the correct profit can be found out. As a result, the owner's capital can be kept intact. जति परिमाण प्रॉफिट होबो सेही प्रॉफिट को आमे शेयर होल्डर को डिविडेंड आकार रे आमे बांटी पाइबा, मींस डिविडेंड आकार आमे डिक्लेयर कर पाइबा. तो सेति पय ओनर्स कैपिटल को इंटैक्ट रखिबा पय, फिक्स्ड कैपिटल रो प्रॉपर वैल्यू जानिबा पय आ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जानिबा पय हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करिबा को पड़िबो. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट मींस whenever a particular asset is used for a considerable period and we expect the asset will continue for a number of years, in some cases it is seen that before the economic life of the asset it goes to unused, it goes to in a such a condition, that means it can't work, it is not in functionable condition. In such cases you have to replace the old one and adopt a new one. तो old one को हटेबार अछि, new one को आनिबार अछि, ये गोटे मैटर. अनदर वन इज आमे गोटे एसेट को एक्सपेक्टेड लाइफ पर्यंत आमे यूज कले. लेट एग्जांपल आमे गोटे एसेट को आनिले and expect कले द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सच एसेट विल 10 इयर्स. तनो 10 इयर्स पर्यंत कार्य करिवो. 10 इयर्स परे, दैट मींस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 10 इयर्स से एसेट आ कार्यक्षम होबो ना, खराब हो जाय. इन सच केसेस हमको सेटा हटेबार अछि, गोटे न्यू को अडॉप्ट करबार अछि. तो जेतबे न्यू को हम अडॉप्ट करबा लंप सम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, बट वी डोंट हैव लंप सम अमाउंट बिकॉज हमें डेप्रिसिएशन चार्ज न कले जो एसेट को हम किनिथिले 10 इयर्स यूज कला परे जेतिक टंकार वैल्यू रे से एसेट को किनिथिले हमें तार कोनोसी रिप्लेसमेंट फंड पाइ परलु ना, जहा द्वारा हमको गोटे न्यू एसेट किनिला बेले कोनी गोटे फाइनेंशियल बर्डन पड़िबो. दैट इज व्हाई हमें इच एवरी ईयर हमें से एसेट रो वैल्यू को डेप्रिशिएट करिवो. जेतिक परिमाण एसेट रो वैल्यू डेप्रिशिएट हो तापे हमें फंड क्रिएट करिवो. दैट फंड ईयर आफ्टर ईयर
accumulated procedure आम जी परिमाण गोटे वर्ष डेप्रिसिएशन चार्ज करे से अमाउंट को नहीं फंड रखी नवा नेक्स्ट ईयर जी परिमाण डेप्रिसिएशन चार्ज होला से अमाउंट को नहीं आम से फंड क्रिएट करवा जो एक्सपायरी 10 इयर्स एक्सपायरी हो फॉर एग्जांपल नहीं 10 इयर्स एक्सपायरी पर देखिब तुम आसेट जितेबाला अकाम हो जाए से फंड रे से डेप्रिसिएशन accumulated वैल्यू तुमको गोटे लमसम अमाउंट दब जहाँ को लेकर तुम आउ किसी पैसा अटैच करके तुम गोटे न्यू वन आणिक रिप्लेस करके गोटे न्यू मशीन किनी पार सो दैट फाइनेंशियल बर्डन पड़ो ना ताकू कंसीडर करके आम कंसीडर कर टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट and it is all as whatever may be the form of asset cannot be used for unlimited period and you know whatever types of assets whatever form of assets that normally used it is used for a specific period considering the past records we have to estimate the economic life of the asset accordingly you have to provide depreciation after the expiry of the economic life and the accumulated value of depreciation will help you to purchase to procure to replace the old one replace a new asset in the place of new one sorry old one तो से हमको ओल्ड वन हटे गोटे न्यू आसेट को किनिया पहले हमको ईच एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करबा अछि नेक्स्ट वन इज योर टू सेव इनकम टैक्स एंड यू नो इन एवरी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन every registered organization has to pay income tax to the government either it is a person means natural person भी परिबो artificial person भी परिबो that means हमको income tax दबा को हेले ए income tax रो परिमाण डिपेंड करिता हमर वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ऊपर मोर विल द प्रॉफिट मोर विल द इनकम टैक्स एंड वाइस वर्सा यदि प्रॉफिट रो वैल्यू अधिक तार तुमको गवर्नमेंट को अधिक इनकम टैक्स दबा पई पड़िबो यदि प्रॉफिट रो वैल्यू कम होला तुमको कम प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स दबा पई पड़िबो दैट मींस if you don't charge means if you don't provide depreciation to your profit and loss account the profit will show at inflated rate and accordingly you have to pay more tax to the government it is a burden. That is why to show the actual profit, to know the actual profit, to find out the actual profit, you have to provide depreciation. As a result, the value of the profit will be shown in the decreased rate, means actual, and as a result, you have to also pay the income tax to the government accordingly, which will not be burdensome. So, why do we pay more income tax to the government? So the profit actual value, considering all the cash and non-cash expenses, find out the actual profit, and accordingly you have to pay to government, pay income tax to the government. Then I come income tax so that it is a point of save. हमें किसी टैक्स सेव करि परिबा कारण प्रॉफिट कम एक्चुअल रेट हेले एक्चुअल वॉल्यूम हेले हम जति के टैक्स दबा जदि हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड न करिबा त अधिक परिमाण रे प्रॉफिट ता शो करे मींस इन्फ्लेटेड रेट रे प्रॉफिट ता अधिक शो करेबो अधिक देखैबो अधिक देखिले हम गवर्नमेंट को अधिक टैक्स दबो तेनो एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करा जाऊ डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाऊ एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करा जाऊ गवर्नमेंट को प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ टैक्स दी दबा ठीक दिया जाऊ आ द्वारा हमें इनकम टैक्स मध्य सेव करबा जो इन्फ्लेटेड रेट रे टैक्स होचे सेटा कमी जबा सेकंड नेक्स्ट वन इज योर वैल्यू इन द सेकंड हैंड मार्केट value in the second hand market point number 6 value in the second hand market means and you know beginning I have told you each and every assets has its economic life निर्दिष्ट समय पर्यंत गोटे एसेट को हम व्यवहार करता आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द एसेट it becomes useless in some cases it is seen that before expiry of the economic life of the asset it loses its functional capacity and it cannot be used further. It comes into such a condition it cannot be used further. So that in that point in this sequence the businessman has to procure a new asset. Now whenever the new asset is purchased obviously the old assets should be disposed of.
तो जितेबाला आम से ओल्ड आसेट को मार्केट रे बिक्री कर तार एक्सपायरी होगा पूर्व बेले बेले किसी आसेट अच्छी तार लाइफ स्पान सरवा पूर्व हठात खराब हो जाए तो आमको मार्केट में बिक्री करार अच्छे तो जिते आम मार्केट में बिक्री करवा न्यू आसेट किणवा प्रश्न आसूची पॉइंट आसूची आम जिते से आसेट को मार्केट में बिक्री करवा से आम बुक भैल्यू मार्केट रो मार्केट भैल्यू ता सहित आम कंपेयर करने पड़ो ये कंपेयर करके आम देखी था आम आसेट को डिस्पोज अफ करने द्वारा हई तो आम प्रॉफिट और लॉस है टू नो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजिंग ऑफ सच एसेट्स यू हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन if you don't provide depreciation you can't find out the actual book value of the assets when it is disposed or when it was disposed जेतबेले ताको हम डिस्पोज ऑफ कले सेतबेले तार जदी बुक वैल्यू हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड न करबा ताले केबे भी हम बुक वैल्यू जानि परिबा जदी बुक वैल्यू न जानि परिबा तेबे मार्केट वैल्यू से तो कंपेयर करि परिबानी एवं जानि परिबानी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू भितर डिफरेंस केते प्रॉफिट हेछि ना लॉस हेछि मींस by selling of such assets whether we have earned some profit or loss that is why to second hand market रे तार वैल्यू जानिबा पे हेले हमको रेगुलरली डेप्रिसिएशन चार्ज करिबा पई पड़िबो and last one is your to comply with legal requirements comply with legal requirements and you know under section 205 of Indian Companies Act 2013 says that before declaring dividend to the shareholders depreciation on fixed assets should be charged that means without providing depreciation on fixed assets you can't declare a company's form of a business can't declare dividend to its shareholders it is mandatory specifically Indian Companies Act under section 205 specifically mention करिछि जदि आपण डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करि नांती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ताले आपण डिविडेंड डिक्लेयर करि परिबे नाही तनो आमे लीगल रिक्वायरमेंट हिसाब रे बा टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट you have to a company form of business has to provide depreciation on its fixed assets to the profit and loss account that is your comply with the legal requirements another point is your income tax Indian income tax act says that so whenever you will provide you have to follow certain procedures you have to follow certain methods of providing depreciation if you don't follow the procedure and the procedures of depreciation as per the income tax act so whatever profit that you earn will not be accepted by the income tax authority rather it will be rejected so that your return of income tax will be in an objectionable condition तुम फाइल ता ऑब्जेक्ट है रिटर्न आईटी रिटर्न ता तुम ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन हेले तुम कंट्रोवर्सी पड़े आसो सेति पई हमको लीगल टर्म सहित मींस आईन लॉ सहित हमको डिफरेंट जो प्रिवेलिंग लॉ अछि इंडिया रे हम ता सहित कंप्लाई करिया पे पड़िबो सेति पई हमको प्रॉपर्ली टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करो एवं प्रॉपर प्रोसीड्योर टैक्स अथॉरिटी एवं कंपनीज एक्ट जहाँ कहते से अनुसार आम डेप्रिसिएशन चार्ज करवा प्रॉपर्ली ताको प्रोवाइड करवा ठीक प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करवा आईन सहित हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंट तांको प्रोविजन अनुसार हमको कंप्लाई करवा जहाँ द्वारा आवश्यकता अच्छी तो these are the points to be taken into account for needs for charging depreciation and it is also a long question whenever such type of question will be asked in the exam you have to point out these points to ascertain correct profit or loss to show fixed assets at proper value to keep owner's capital intact to provide for replacement to save income tax value in the second hand market last one is your to comply with legal requirements these are the points are to be remembered
for the purpose of examination point of view. Okay, next one is your factors influencing the quantum of depreciation. Factors influencing the quantum of depreciation. Depreciation परिमाण केते हबो क्यों फैक्टर उपरे निर्भर करछि कहा उपरे निर्भर करछि हमर डेप्रिसिएशन अमाउंट वैल्यू केते परिमाण हबो. नंबर 1 इज योर original value. Number 2 salvage value. Number 3 is your economic life. Number 4 addition or deletion. Number 5 chance of obsolescence. Number 6 legal consideration. Number 7 methods of depreciation. Number 8 level of maintenance. These are the points which influences on calculating the quantum of depreciation, volume of परिमाण depreciation. Factors influencing the quantum of depreciation: original value, salvage value, economic life, addition or deletion, chance of obsolescence, legal consideration, methods of depreciation, level of maintenance. Original value, assets. Any assets, whenever we purchase first time, procure, you have to pay some amount to the supplier, the concerned supplier. The price at which you purchase the asset is your original value. It includes the cost of the asset paid to the supplier plus erection, installation charges, transporting charges, loading, unloading up to the point of production. Means original cost means आमे asset रो मूल्य जति की टंका दे आमे गोटे सप्लायर थारु किनिले प्लस से सप्लायर थारु आम मशीन को आनिबा पर्यंत आम बिजनेस सेंटर को आनिया पई जो चार्जेस पड़िला से कॉस्ट हबो. मशीन को इंस्टॉल करिया पई स्थापन करिया पई जो मैकेनिक आसी ताको इंस्टॉल करंती से मध्ये किछि चार्जेस नियंती से चार्जेस गोटे सब मिसिस गोटे सब मिसिले आम तार एक्चुअल कॉस्ट को पाई परिबा ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड. That means more is the original value, more is the cost, more will be the depreciation, less is the cost, less will be the depreciation. जते asset value जते अधिक हो depreciation value टा बढ़िबो, asset value जते कम होला depreciation value कमिबो. देखियो तो original cost is also a factor of influencing the quantum परिमाण पर है. salvage value आमे एठी मध्ये कहि परिबा is your scrap value कहि परिबा बा अदर टर्म इज योर रेसिडुअल value
salvage value, scrap value, residual value. Remember this term, it is the meaning the same. Salvage value आमे गोटे asset को considerable period पर्यंत व्यवहार कर सारा परे जेतबेले एटा को आमे हटे थाउ, it fetches some value in the market. Let example आमे गोटे गाड़ी टे किनिचे, it will continue for 15 years, 15 वर्ष परे मध्ये देखिले फंक्शनल कैपेसिटी अछि 15 years परे बा जदि पूरा अकामी हे गला तापर आमे कोन करछि ताको आमे लुहा कट्टा दर रे कबाड़ी वाला को बिक्री कर दोछि। तो बिक्री करबा द्वारा किछि परिमाण पैसा रिटर्न आसिला, तम मूल्य जेति टंका दे किनिथिलो 10 वर्ष व्यवहार कला परे मध्ये आमे ताको हटै दोछे, आमे ताको किलो दर रे बा कबाड़ी वाला ठारो किछि पैसा रिटर्न पाउछे। दैट इज योर साल्वेज वैल्यू। तो साल्वेज वैल्यू बा रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू पहले रिमेंबर दिस वन। तो साल्वेज वैल्यू जिते अधिक हो तमरो डेप्रिसिएशन वैल्यू सेते कमिबो। साल्वेज वैल्यू जदि कमिला डेप्रिसिएशन वैल्यू बढ़िबो, साल्वेज वैल्यू बढ़िले डेप्रिसिएशन वैल्यू कमी जिवो। जहा द्वारा हमें तार क्वांटम ता केते परिमाण निर्भर करूछि का पर साल्वेज वैल्यू। इकोनॉमिक लाइफ, different types of assets having different economic life, maybe the life of 10 years, 15 years, 20 years, 5 years, 1 year, like this different types. That's more with the, that means more in the economic life, less will the depreciation, less will the, if the economic life is more, that means quantum of depreciation will be less. Addition or deletion, whenever we use a particular asset in different cases, different heads, we add new assets, new parts, or we dispose of some parts of the assets depending upon the addition deletion, the quantum of depreciation also changes. Chance of obsolescence, time to time देखी तो obsolescence अर्थ बुझे थी introduction of a new technology. Whenever a new technology introduced, old technology becomes useless. Though it has functional capacity, but it becomes useless because of the introduction of a new technology. If there is every possibility, there is every chance of obsolescence, means introduction of a new technology, in such cases the depreciation value charges. Then quantum of value depends upon परिमाण कमी हो बड़ी और कहाँ पे ना obsolescence रो chance हो बड़े. More is the chance, अधिक chances अच्छी, accordingly से इस depreciation value कमी हो बड़ी हो. Legal consideration, time to time हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा डिफरेंट जो लीगल टर्म अछि एक्ट अछि, आमे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आमे गवर्नमेंट रा डिफरेंट लीगल टर्म को आमे फॉलो करथाउ टाइम टू टाइम से आईन अनुसार आमे को फॉलो करे पे पड़थाय। डेप्रिसिएशन क्वांटम मध्य कम बेसी देता है। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हेनेवर वी use different types of methods in charging, in calculating depreciation, particularly your straight line method, written down value method, annuity method, sum of digits method, number of methods are there in calculating depreciation. So as per your viability and considering the legal support, you have to select one of the method to calculate the depreciation. I will teach you later different methods of calculation, depreciation, methods of calculating depreciation, and accordingly you have to solve the problem. So different methods जेतरे हम depreciation follow करिबा, accordingly depreciation रो value मध्य कम बेसी होता है। जदि हम original cost method बा straight line method जदि हम depreciation charge करिबा ताले depreciation quantum टा बढ़ी जिवो। जदि हम written down value method बा WD method follow करिबा ताले तमर quantum of depreciation कम जिवो। तो से अनुसार डिपेंड करूची हमें को मेथड फॉलो करिबा। एंड लास्ट वन इज योर लेवल ऑफ मेंटेनेंस। लेवल ऑफ मेंटेनेंस जिते परिमाण रो मेंटेनेंस बढ़ी जिवो, फंक्शनल कैपेसिटी बढ़िबो। मेंटेनेंस जिते अधिक हो तुमरो मेंटेनेंस चार्जेस टा बढ़ी जिवो, मशीन रो फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ी जिवो। फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ी गेले डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन आसीबो। यदि कोनोसी एसेट रो मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम तार डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली से हिसाब कैलकुलेशन आसीबो। तो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ी जिवो, तार फंक्शनल कैपेसिटी से अनुसार बढ़ी जिवो, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली से हिसाब चार्ज होबो। जहां पर डिपेंड करछि हमर डेप्रिसिएशन रो परिमाणटा केते अधिक होबो। तो मशीन जिते अपडेट कंडीशन रहइबो, गोटे एसेट जिते फंक्शनेबल कंडीशन रहइबो, अपडेट कंडीशन रहइबो, अकॉर्डिंगली से हिसाब हमर डेप्रिसिएशन रो क्वांटम मध्य
कम बेसी होता है। तो these are the factors to be taken into account. Factors are to be taken into account to calculate the quantum of depreciation or to know the volume of depreciation, like original value of the asset, salvage value, scrap value or residual value, meaning sale. Economic life of the asset कितने पर्यंत कार्यकारी हो एडिशन और डिलीशन न्यू एसेट को आम अटैच करथाउ किछि पार्ट्स खराब हेले हटे देथाउ पुनी तादे न्यू पार्ट अटैच करथाउ चांस ऑफ ऑब्सोलेसेंस लीगल कंसीडरेशन मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन लेवल ऑफ मेंटेनेंस सो दीज आर द फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू कैलकुलेट और व्हिच influence the quantum of depreciation. Go through the book, follow all these points are in the books, follow these books and learn these points and its description so that you can remember as a result जोटा कि तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सहज कराइदब। थैंक यू।